ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगोलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दिनतारिणं परमानंदं माधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो पिछली कक्षा में जस्ट टुडे मॉर्निंग, आज सुबह हमने श्रीपद मध्वाचार्य के जन्म के बैकग्राउंड के बारे में देखा। मध्वाचार्य जी का जन्म 1238 ईस्वी में होता है, जब लगभग सभी आचार्य आ चुके होते हैं। लाइक वी हैव 4 वैष्णव आचार्यस एंड 1 आचार्य इन बोनस, शंकराचार्य कमिंग इन द फर्स्ट। सो शंकराचार्य ने क्या दिया हमें? वेदों को फिर से दिया। आई मीन वेदा वाज एब्सोल्यूट, परफेक्टली टेकन आउट फ्रॉम द सीन ऑफ भारतवर्ष बाय द पावरफुल एथिस्टिक प्रीचिंग ऑफ our dear Buddha. So Veda was brought. Then we saw that Veda, after getting Veda in the system, then there was another challenge, that the full conclusion of Vedanta or Veda, which is loving relationship of living entities with Supreme God, was not revealed. I mean, not propagated by Shankaracharya. Shankaracharya himself was perfect devotee of Lord Sri Krishna. यहाँ तक उन्होंने ये भी बोल के गए, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते प्राप्तिस्य सन्निहिते काले नाही नाही रक्षति दुक्रीन कारणे। तो शंकराचार्य ने बोला कि अरे मूढ़मती, मतलब कि मूढ़मती वाले लोग, भज गोविंदम, चैंट द नेम्स ऑफ लॉर्ड हरि गोविंदा। ये सारे जो तुम्हारे जो वर्ड जगलरी है, सारे जो न्याय है, सारा जो संस्कृत ग्रामर है, ये सारे जो तर्क वितर्क जो तुम बैठ के करते रहते हो अपने आप को होशियार बताने के लिए, दिस विल नॉट वर्क एट द टाइम ऑफ डेथ। तो संप्रप्य सन्निहिते, संप्रप्य मतलब एट द टाइम डेथ, दैट विल नॉट एनी यूज। बट उस समय के लोग, आई मीन दे कुड नॉट टेक लिटरली what Shankaracharya was inside in his own heart, he was accepting. So then there was the whole, all 4 Sampradayas sons arose. The 4 sons arose, starting from Vishnu Swami. So Vishnu Swami comes. Then after that we know this. After Vishnu Swami, who comes? Ramanujacharya comes. Then Nimbarkacharya comes. Then after that Madhvacharya comes. And Madhvacharya comes like taking this, like क्या बोलते हैं उसको, गदा. So Madhvacharya is also, we saw that Madhvacharya कौन थे? Madhvacharya कौन थे? हनुमान जी और भीम जी के अवतार, भीमसेन और हनुमान के अवतार थे. So he got in the same mood, taking up the club of devotion to the Supreme Lord, club, or smashing all that different hodgepodge and different types of philosophy who is telling that you don't need to worship the Lord and you is one and everything is one, Brahman, and people are confused. People are not happy because ananda and happiness which is aroused and which is can only we can get from devotional service.
when there is distinction between Supreme Godhead and living entities. Supreme God is Supreme God. He is worshipable. He is servable, right? There's someone is servable and somebody is to serve. So there is a relationship. So when there is a relationship, मजा तो तब आता है ना जब relationship होता है, right? So the unlimited Ananda is there when living entities can make relationship with unlimited Supreme Personality of Godhead Ananta, who is अनंत सत, अनंत चित्त और अनंत आनंद. तो अनंत आनंद के साथ अगर रिलेशनशिप बनेगा तभी जीवों का आनंद का उदय होगा. But people were bereft of this real essence of Ananda. And to give this, there was required of dismantling and smashing this nonsense philosophy, ignorance, अंधकार लोगों के मस्तिष्क से. तो आविर्भाव होता है श्रीपाद मध्वाचार्य का, राइट. सो हमने सुबह में मध्वाचार्य जी के बारे में देखा कि कहाँ तक हमने उपनयन संस्कार तक चर्चा की थी, राइट. ऑल ऑफ यू रिमेंबर, राइट. टिल उपनयन संस्कार भी डिस्कस्ड. कैसे मध्वाचार्य जी का जन्म हुआ और उनके पिताजी उनको पढ़ाने की चेष्टा किया करते थे. बचपन में इन्होंने कितनी कितने तरीक़ों की मिरेकल्स किए, है ना. और 40 किलो का खाना जो कि गाय खाता है वो खा गए, इतनी भूख लगी थी. बहुत बड़े भुक्खड़ थे वो. आई मीन ही वाज नॉट ऑर्डिनरी भुक्खड़. द सेम भीम हु कुड ईट द होल, आई मीन बैलगाड़ी. उस समय की बैलगाड़ी बहुत बड़ी थी, ट्रक के समान थी. आजकल का ट्रक जितना लोड करता है ना उतना पहले की बैलगाड़ियाँ लोड करती थी. और उतना भीमसेन बस एक टाइम में खाता था और खाने में ज़्यादा समय नहीं लगता था, राइट. द सेम भीमसेन हैज अपीयर्ड एज मध्वाचार्य. सो नाउ लेट्स प्रोसीड अहेड फर्दर. सो वसुदेव एंड हिज चाइल्डहुड नेम वाज व्हाट? वसुदेव. सो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से सुनना है आज की जो ये चर्चा है, बिकॉज Vasudev, and there are so many other names of Madhvacharya. Then we will see that how many names you actually remembered. So हमने देखा कि उपनयन संस्कार वसुदेव जो कि मध्वाचार्य फ्यूचर में होने वाले हैं, उनका उपनयन संस्कार होता है. विद्यारंभ 5 साल की उम्र में हो जाता, आई मीन 5 साल की उम्र में विद्यारंभ होता है. लेकिन उपनयन यूजुअली है ना 7-8 साल में होता है, 7-8 या भी 10 साल में. लेकिन इनका बहुत जल्दी हो गया क्योंकि he was so smart, so spiritually advanced person. वसुदेव, इनके पिताजी ने सोचा कि यार इसका उपनयन जल्दी कर देते हैं. So after becoming brahmanical initiated, he become very strict. No naughty business, no playing with tamarind seeds. Now he has to sit with different books. So that time books were different as now we have. So we have to recite different prayers and suktas and stavas and all stuffs. उनके पिताजी स्वयं सभी चीज़ जितने भी ब्राह्मण के जितनी जो क्वालिटीज़ हैं वो सब सिखाया करते थे. कैसे आचमन करते हैं, नहाने के बाद कैसे शरीर कैसे नहाते हैं, नहाने के बाद आचमन करते हैं, फिर अपने शरीर को अलग अलग भगवान के नाम से कैसे फोर्टिफाई करते हैं, सुशोभित करते हैं, जिसको न्यास कहा जाता है. न्यास, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मुद्रास. सो सब कुछ इन्होंने बताया, इन्हें पढ़ाया. किसको? वसुदेव को. तो वसुदेव जो कुछ भी उनको पढ़ाया जाता था तुरंत सीख जाते थे, सब कुछ फटाफट. संध्या वंदन कैसे करना है, कैसे आचमन करना है, फटाफट इज टू लर्न एवरीथिंग. सो देन कम्स द टाइम ऑफ स्कूलिंग. सो ही हैज टू गो आउट. Ultimately he has to go out. So for schooling, so there was one small little, village near his father's village. So there was one teacher. So there he used to go to learn something, some further knowledge. जैसे primary education तो हो गया from his father. His father's name was Madhvacharya Bhatta. So one day there was another very, very famous story that he was going to school. So in Dwapar Yuga there was one demon called Maniman. He was killed by Bhimsen. लेकिन मणिमान मर जाने के बावजूद भी भीमसेन से वो
प्रतिशोध लेने के लिए वो फिर से जन्म लिया कलयुग में. एंड ही केम एज अ स्नेक एंड ही वाज नोइंग दैट भीमसेन विल अगेन कम बैक. भीमसेन क्या है, फिर से वो आने वाले हैं. किस रूप में? मध्वाचार्य के रूप में. सो टू टेक रिवेंज, ये मणिमान वो फिर से वहां पे पहुंच गया. तो जब जा रहे थे तो क्या हुआ ना कि उधर से बहुत बड़ा सांप आया. एंड दैट स्नेक वाज 5 हुडेड, 5 उसके फण थे, 5 उसके फण थे. तो ऐसे सांप कभी कभी मिला करते हैं. फण यूजुअली अब कोबरा जो सांप है उसके बाद एक फण होते हैं. ऐसे ऐसे सर्प हैं जो कि जिनके कई फण होते हैं. यूजुअली अभी देखा नहीं जाता ऊपर में, कभी कभार देखा जाता है. सो स्टार्टेड बीटिंग वासुदेव. वो सांप आया तुरंत. छोटे छोटे जो बच्चे थे उनके साथ में जो जा रहे थे, उन्होंने तो वहां से 9-11 हो गया, फट से भागे. बट इतना दंश मारने के बावजूद भी वासुदेव वहां से भागा नहीं. और वो वासुदेव ने क्या किया, अपने पैर से उस उस सर्प का उसके अपने पैर से उसने उनको उसके माथे में मारा और एक पत्थर के ऊपर दे दिया उसको चपका के. एंड that snake died there, and that place is still there, and that the mark of that fun, that hood of that snake is still there. It's visible. People they go and see. And such was the power of Vasudev, small little Vasudev. You can imagine 5 साल के बच्चे के पास कितना पावर होता है. And he was just, then he started playing. And that time schooling was not like that now, like you have to go and you have to be in a dress and you have to go in a buggy or you have to go in a car or in a bus. लोग खेलते खेलते जाते थे, बच्चे पढ़ के आ जाते थे, खेलते खेलते ही पढ़ लेते थे, right? So then what happened, this Vasudev started playing more. और ज़्यादा खेलने मतलब बस खेल रहे थे. बहुत ज़्यादा लेट हो गई. I mean, he was far off from his home 2 kilometers far. 2 किलोमीटर दूर थे. तो बहुत देर हो गई, लेकिन उनको अंदेशा हुआ कि मेरी माँ हो सकता है मुझे बुला रही होगी. So it was so much late and he was able to conceive that मेरी माँ मेरे ऊपर बहुत गुस्सा होगी अगर मैं लेट जाऊंगा तो क्या करते हैं वसुदेव, वहां से उस छोटी सी पहाड़ी पे, छोटे से हिल पे वो खेल रहे होते हैं, वहां से वो कूद जाते हैं. he jumps from there and lands where? In his mother's house. 2 किलोमीटर वहां से वो कूदते हैं. This is the same person, हनुमान जी, जो कि लंका से कूदे और कहाँ पे जाके गिरे? गंधमादन माउंटेन के ऊपर. गंधमादन माउंटेन इज वेयर? इन हिमालय. द सेम पर्सन. So it's not something big thing like azuba, something like that. So seeing these all features, Madhvacharya Bhatta was fully assured that this is the person for whom that day before his birth, one person actually ascended to that flag hold of that temple, Lord Shiva temple, and he was telling that they're going to come, the descent of Vayu will propound the real religious principle of Sanatan Dharma. So यही है और कोई नहीं है. तो उनके गुरुजी का नाम था, जो प्राइमरी गुरुजी का नाम, प्राइमरी स्कूल के गुरुजी का नाम था टोटानी थिलैया. तो साउथ इंडिया में ऐसे कुछ कुछ नाम होते हैं. टोटानी थिलैया आप लोग नाम ले सकते हैं. उनके प्राइमरी गुरु का नाम था टोटानी थिलैया. एंड उनके घर पे जाया करते थे. स्कूल मतलब घर ही होता था, ऐसा नहीं कि स्कूल जैसे आजकल है ऐसा. तो वहाँ पे खेला कूदा करते थे और पढ़ाई में उतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया करते थे. देखिए ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कहानियाँ पढ़ रहे हैं, दिस इज़ एक्चुअली नॉट टू बी इमिटेटेड, है ना. ऐसा नहीं कि अब आप भी जाओगे तो मध्वाचार्य वासुदेव पढ़ा नहीं करते थे ज़्यादा. फाइटिंग बच्चों के साथ खेलते रहते थे. और किसी भी बच्चे के साथ, अपने स्कूल के बड़े बड़े बच्चों के साथ भी वो लड़ लेते थे. रेसलिंग, क्या बोलते हैं उसको, रेसलिंग. एंड यूज्ड टू डिफीट देम. लाइक nobody was like any match in front of वासुदेव. पढ़ने में हो,
या फिर रेसलिंग में हो, किसी भी चीज़ में, ही वॉज ऑलवेज अ लीडर। और बच्चों ने उनका नाम भी रख दिया था भीम, ए भीम है भीम। कभी कभार हम लोग भी स्कूल में किसी का नाम कुछ ऐसा रख देते हैं ना, बट ही वॉज रियली भीम, ही वॉज नॉट लाइक नाम रख दिया वैसा। सो ही वॉज रियली द भीम। सो भीम द वासुदेव, पावरफुल। And he used to study, he used to sit and he used to listen to the lessons, and बीच में ही उठ के चप्पत, पता नहीं बीच में वासुदेव कहाँ गया। टीचर टोटानी थिलिया देख रहे हैं, अरे वेयर इज वासुदेव, ऑल स्टूडेंट्स आर हियर, वासुदेव इज मिसिंग। और उसके बाद थोड़ी देर में पता चल रहा है कि वासुदेव इज स्लोली कमिंग इन द क्लासरूम। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम था उनके साथ, भूख बहुत लगती थी उन्हें। हम लोग को बस 3 बार भूख लगती है आजकल, तो मुझे तो बस एक ही बार भूख लगती है, एक बार खाने को लगता है कि दिन भर ना खाऊं। बट बिकॉज वासुदेव वाज वायुदेव हिमसेल्फ, वायु मतलब क्या होते हैं, वायु इज द मेन फैक्टर ऑफ डाइजेशन। प्राणपान समय कृत्वा, प्राणपान समायुक्तम पचामी अन्नम चतुर्विधम। तो ये जो प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, व्यान वायु, ये सब जो है, so this is actually of having great thing, great this is a great factor। but वायु देवी स्वयं है, तो कितनी भूख लगी। तो दिन भर में एक क्लास में 2-3 बार वो प्रसादम हम लेके घर से आ जाते थे फट से। सो टोटानी थिलैया वाज पजल्ड, क्या पढ़ रहा है ये, पता नहीं, बंदा इतना फाकी मारता है, पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। वन डे ही कॉट हिम, टोटानी थिलैया, वसुदेव को उन्होंने पकड़ा और बोल रहे हैं कि वासुदेव, you are doing too much फाकीबाजी, we understand that you are not considering the lessons so seriously, so now today we'll check, there will be assessment session today। so Vasudev, okay Gurudev, whatever you wish, so please tell what are the lessons you learned today। so फटाफट he told everything, everything perfectly, all the slokas, stavas, and then he started telling what he is going to teach in future, what he has not taught even। and ऐसा नहीं कि पहले सिलेबस की किताब पहले से आउट है, तो पढ़ाई करने से पहले कोई पढ़ लिया है ना तो समझ सकते हैं, ऐसा नहीं होता था। ऐसा नहीं कि सिलेबस का पेपर ये सब आउट है, ये सारे सिलेबस रहेंगे। बच्चे पढ़ लेते हैं ना, कुछ होशियार लोग होते हैं, आप लोग उसमें कुछ होशियार लोग होंगे, है ना, पढ़ लेते हैं पहले से। बट इट वॉज नॉट सो, व्हाटएवर हैज बीन टॉट वंस मीन्स दैट्स इट। इट वॉज नॉट लाइक बुक दिया जाएगा, असाइनमेंट करके आओ, इतना पढ़ के आओ, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, जब बोला गया बस वहीं से क्वेश्चन आएगा। एंड ही स्टार्टेड टेलिंग एवरीथिंग आउट, ही वाज शॉक्ड, माय गॉड व्हाट इज दिस। सो दिस इज लाइक unimaginable for him, Totali Thilaiya, quite very good name, you can remember as Totali Acharya or something like that, it become easier for you, it will become easier for you। so being fully happy and I'm completely happy with Vasudev, this Totani Thilaiya, Gurudev of primary Gurudev of Vasudev, gives him name Anuman Tirtha। so this is the second name, right, the second name of Ramanujacharya, Anuman Tirtha, means he is able to conceive that what's gonna be taught in future sessions। so Totani Thilaiya has one son, after some day what happened, his son got very heavy headache। मतलब पहले ऐसे ऐसे चीज हुआ करते थे, बहुत ही bizarre types of things। so they were going from one place to another, कहीं किसी पेड़ के नीचे सो गए तो कोई वायु आ गया, कोई घोस्ट हॉन्ट कर दिया, and he was in very powerful headache that not even no medicine was working। then Vasudev told, what is this, what type of headache he has got। और कान में जाके, गुरुदेव के पुत्र के कान में जाके जोर से कुछ फूका हो, है ना, सारा हेडेक चला गया। and he started showing static symptoms also। so this is Vasudev, just 5-6 year Vasudev doing all miracles। once he was hearing from somewhere, someone was glorifying
the Supreme Lord, from Attari Upanishad. So there is 108 Upanishads. So one of the very famous Upanishads is called Attari Upanishad. Attari Upanishad है, तैत्तरी उपनिषद है, बहुत सारे उपनिषद हैं, 108 टोटल. तो Attari उपनिषद में भगवान नारायण की ग्लोरी गाई गई है. So he was hearing from one Brahmana, and just by hearing, in just 2 minutes, he memorized whole Attari Upanishad. Whole Attari Upanishad. And since then, like Madhvacharya, I mean Vasudev was always keeping the slokas and stavas or stutis of Attari Upanishads into his heart. And later on, Totanithilaya wanted to teach that Attari Upanishad. But he came to know that Vasudeva is knowing it already, everything. So he was so very happy. So he thought he doesn't require to be taught more. He knows more than me. तो उन्होंने सोचा कि इसको अब ग्रेजुएशन दे देते हैं, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशन हो जाना चाहिए इनका. So I request devotees to make notes also, because at the end of your session you are gonna go get a quiz also, right? Quiz is very, very important. We are not Vasudev, we know that. मंद सुमंद मतियो देव है हम लोग, है ना. So इधर से आता है उधर चला जा सकता है. So at least some names if you could remember, that's really good. Ishtadev Gopal Prud preparing very wonderful quiz for all of you. गर्मा गर्म quiz मिलेगा, एकदम fresh बन रहा है वो अभी, है ना. सारा तेल वेल मसाला वसाला डाल के तो रेडी रहिए क्विज के लिए, right? Okay. So Tanithilaya thought that he should be get graduated. Why to keep him like this? So उन्होंने ग्रेजुएशन दिया. लेकिन जब वसुदेव जा रहे थे उनके घर, उनके स्कूल से, उनके घर से, Totanithilaya was simply crying tears. सिर्फ रो रहे थे. Means he was getting, I mean, somebody is crying for devotees is as equal is somebody crying for the Lord. And devotees who is Vayudev himself, who is so dear servant and friend of Lord Sri Krishna, who is Bhimsen himself, right? If somebody cries like with any sentiment for the devotee, like I had the experience of crying for some devotees in my life. I am I'm finding myself so greatly fortunate that like it becomes so easy to relate with Supreme Personality of Godhead if you have some attachment toward the devotee, if you could cry for the devotee, right? So Vasudev, now being graduated from his primary school, is just around 7-8 years, और वो सोच रहे हैं कि how I will just fulfill the mission of my descent. Mission of his descent is what? उनके अवतार का क्या ऑब्जेक्टिव है? To establish द्वैत सिद्धांत, द्वैतवाद मतलब Supreme Personality of Godhead is servable. Supreme Personality of Godhead is Supreme Personality of Godhead. Jiva is his eternal servant. To establish this is called Dvaita Siddhanta. And to remove the fog, the smog of Advaita, means everything is one, right? So many times I have told what the great fallacy of having this understanding that everything is one. People are bereft of service. People are bereft of the loving relationship, that ananda, the pleasure one can get from serving the Supreme Personality Godhead. So now Vasudev, being graduated, he is contemplating how he will do this. So Madhvacharya Bhatta, he started thinking now he has graduated. Now पहले क्या होता था ना कि बचपन में शादी हो जाया करती थी, तो बच्चा प्राइमरी स्कूल पास कर गया तो बस शादी हो जाया करती थी. उस समय 10-11 साल में शादी हो जाया करती थी. इनफैक्ट my father, he tells that I got married in some 12 or 13 years. He born in somewhere in 1941. So before it was so, and forget about some 1000 years before. 1000 साल पहले की तो बात ही तो जब मध्वाचार्य appear हुए थे. So Madhvacharya Bhatta is now thinking of searching of a girl, एक suitable लड़की की खोज में है. Usually that what it happens. So पिताजी का headache होता है कि how to find out some suitable girl for my son. And Vasudev is here thinking of the mission. अब यहाँ पे twist वाला चलने वाला है यहाँ पे story. So Vasudev is searching for his mission,
and in fact he is searching for the guru so that he could take up sannyas. Now he is a 7 or 8 years old boy. He's not thinking of taking up sannyas. So he's now thinking that where he will go, how he will meet with somebody who could be in the right disciplic succession, and he could take up this mission. Because before getting into preaching, he need to be authorized. So he need to get into some disciplic succession so that he could preach. So he was thinking, he was searching. Somehow that he came to know about the personality. His name was Achyut Preksha. So Achyut Preksha was a devotee, a great devotee. He was staying nearby Udupi. There is a place. This name is Bandarka Kare, something like that. Bandar Kare. Huh. Its name is Bandar Kare. Yeah, its name is Bandar Kare. So he was staying there. So Bandar Kare में अच्युत प्रेक्ष रहते थे. अच्युत प्रेक्ष का मतलब होता है, अच्युत मतलब श्री हरि, अच्युत मतलब भगवान श्री कृष्ण का नाम है एक अच्युत. प्रेक्ष मतलब जो जानता है भगवान के बारे में. और अच्युत प्रेक्ष बंदार करे नामक छोटे से गांव में रहा करते थे. बोला जाता है अच्युत प्रेक्ष ये भीम के या फिर बोला जाए तो पांडवों की पैलेस में रहा करते थे. पांडवों के पैलेस में एक बहुत ही प्यारा सा बम्बल भी था. बम्बल भी मतलब भ्रमर करके जो डिफरेंट फ्लावर्स में जाते हैं. तो एक बहुत ही प्यारा सा बम्बल भी था जो कि द्रौपदी को बहुत प्रिय था. द्रौपदी उसको खाना खिलाया करती थी. सो दिस अच्युत प्रेक्षा वाज इवन दैट पर्सन. सो Vasudev started thinking that he will go to Achyut Preksha. So slowly he came to know about him well, and then one day he left for Achyut Preksha. So he was somewhere around 5-6 kilometers. So frequently he used to go. Frequently वसुदेव अच्युत प्रेक्ष के घर जाया करते थे और अंदर ही अंदर अच्युत प्रेक्ष को अपने गुरु के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया था. तो अच्युत प्रेक्ष वाज द डिवोटी इन ब्रह्म संप्रदाय. जो ब्रह्म संप्रदाय चली आ रही है ना, तो ये चारों संप्रदाय है, ये इटर्नल संप्रदाय है. ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, इटर्नल संप्रदाय है. सो दीज आर द 4 most bona fide authorized schools or disciplic succession, which is actually giving the pure Sanatana Dharma, pure, without having any tinge of hodgepodge conception, pure Sanatana Dharma of service to the Supreme Godhead. Yeah. So that was still coming, it was still alive, but they were almost like taking last breath. जैसे कोमा में क्या होता है, लोगों का हालत वो वेजिटेशन लेवल पे चले जाते हैं, लास्ट ब्रेथ ले रहे होते हैं. somehow they were living, somehow these schools were living with some people, linking and connecting the link. So similarly this was the situation for Brahma Sampradaya. So Achyut Preksha was in that line, and they were so fearful of such a heavy upsurge of Advaitavad preached by Shankaracharya. And Achyut Preksha's spiritual master has in fact ordered Achyut Preksha, मरते मरते शरीर छोड़ते छोड़ते उन्होंने ऑर्डर दिया था कि we have to make revolution against this false theory, the false vada, the false, this is false, this preaching of Advaitavad, in which there is no service to the Supreme Lord, and people are actually misled in so many numbers, and they're not able to understand what to do into their life. But Achyut Preksha was quite very humble, and he was feeling that how I will do this, because it's the instruction of my guru that to make this revolution against this Advaitavad, वो कैसे कर पाएंगे. तो Achyut Preksha also used to go Ananteswar temple. Ananteswar temple is like center of these all great personality. They used to go. Ananteswar temple is the temple of Supreme Lord Narayana, which is still there in Udupi. तो अच्युत प्रेक्ष वहाँ पे प्रार्थना किया करते थे कि हे भगवान मुझे हेल्प करो, मैं कैसे कर पाऊंगा ये, हाउ आई विल एबल टू चैलेंज दिस सच ए पावरफुल अद्वैत फिलॉसफी विच इज परवेडेड एवरीवेयर प्रैक्टिकली. सो सिमिलरली द सेम टाइप ऑफ इवेंट दैट टेक्स प्लेस, एक आदमी भीड़ से निकल के आता है और बोलता है, नहीं, ही इज लाइक ही इज लाइक पोसेस्ड बाय अनंतेश्वर. वो बोलता है कि देखो अच्युत प्रेक्षा,
मैं तुम्हें एक आदमी दूंगा जो कि तुम्हारी इस मिशन में तुम्हारी सहायता करेगा। मैं एक आदमी तुमको भेजूंगा, सो डोंट वरी, दैट पर्सन इज श्योरली गोइंग टू ज्वाइन यू। So in this way, Achyut Preksha was able to somehow figure out, I'm somehow able to feel that this person Vasudev could be that person for whom that person and that possessed person has told about. So usually एक possessed person आता है मध्वाचार्य की लाइफ में, जो कि अनंतेश्वर, भगवान अनंतेश्वर के द्वारा पोसेस्ड होता है, और वो भगवान के बिहाफ में बोल के जाता है। So Supreme Lord gives indication by different way. Many times he gives indication through a dream also. Many times he gives indication, and most of the time he gives indication from his spiritual master. The spiritual master tells, means it is the Supreme Lord's direct direction. But many times, seldom it comes like this also. Very few cases like dream and somebody told like that. So मध्य गे भट्टा अलार्म हो जाते हैं। मध्य गे भट्टा मीन्स फादर ऑफ वसुदेव। ही इज लाइक, मैं यहाँ पे इसकी शादी की सोच रहा हूँ, ये बंदा है तो 5-6 साल का है या घूम रहा है इधर से उधर, पता नहीं इसको क्या लगी है, इसका तो कुछ मन है ही नहीं, ये शादी करेगा कुछ करेगा। एंड वसुदेव टेल्स हिज फादर, फादर डोंट वरी अबाउट मी, डोंट सी गर्ल्स हियर एंड देयर, I'm not going to go and get married. You live with this all things. Why you are toiling yourself so much? चिंता मत करो। And then Vasudev, Madhvacharya Bhatta is like, he is single son. बंगाल में यूजुअली सिंगल सन होते हैं सबों के। सिमिलरली ही आल्सो हैविंग सिंगल सन। मध्वचार्य भट्टा के एक ही पुत्र थे जिनका नाम था वासुदेव, एंड ही इज टेलिंग दैट ही विल टेक संन्यास। नाउ इट्स लाइक गाज गिर गया उनके सर के ऊपर। Now is such a desperate situation of Madhvacharya Bhatta, his wife Vedavati, that it's unimaginable. In fact, एक बार मध्वचार्य भट्टा falls down on the feet of Vasudev, छोटा वासुदेव 7 या 8 साल का होगा, उनके चरण में गिर के उनको कन्विंस कर रहे हैं कि प्लीज डोंट टेक संन्यास, प्लीज डोंट टेक संन्यास। So then Vasudev tells, say father, पिताजी कभी बेटे को प्रणाम नहीं करते हैं, आप पिता होके बेटे को प्रणाम कर रहे हो। बेटे को पिता तभी प्रणाम करता है जब बेटा सन्यासी होता है। तो मुझे समझ में आ गया कि आपने ये मंजूरी दे दी है जाने अनजाने में। सो आई एम नाउ फ्री, ओके, सो यू कैन बी एट होम, don't worry about me, Krishna will take care. So he just left. And Achyut Preksha, Achyut Preksha, who is going to be the spiritual master of Vasudev, he left his place, his hometown, his village, some more far off, maybe 60 kilometers far off from Udupi. He left for Kavur. There is still one place called Kavur. And this Vasudev is such a mad person. He's not mad. He came for mission. Like, he's not into some illusion. Like, usually people, we are all like, we are into illusion. But he came for mission. He know who is he, for what he came. So he also left. He is searching after Achyut Preksha. Where is Achyut Preksha? So Achyut Preksha left for Kavur. He also left for Kavur. And Vasudev's father, Madhvacharya Bhatta, he also thinking, searching, where is Vasudev? Where is Vasudev? वसुदेव के पीछे पीछे वो भी कवूर पहुंच जाते हैं। अब कवूर में पहुंच के मध्वचार्य भट्टा बोलते हैं अच्युत प्रेक्षक, प्लीज डोंट गिव हिम संन्यास, डोंट गिव हिम संन्यास। देन मध्वचार्य भट्टा अगेन प्लीड्स वसुदेव, हिज ओन सन, प्लीज डोंट टेक संन्यास, डोंट टेक संन्यास। आई विल डाई, योर मदर विल डाई इन सेपरेशन, वी डोंट हैव एनीवन टू प्रोटेक्ट एंड एनीवन टू टेक केयर ऑफ अस, प्लीज प्लीज प्लीज, स्टार्टेड प्लीजिंग, क्राइंग टीयर्स। देन वसुदेव tells, okay Baba, if you want this, that I want to be there because you don't have anyone to protect, so don't worry, I will not take sannyas till the time you have someone to protect you. मैं तब तक संन्यास नहीं लूंगा जब तक कि आपके पास कोई है। तो he indicated, Vasudev indicated that he is going to have his younger brother,
यंगर ब्रदर मतलब वेदवती इज गोइंग टू हैव अनदर सन. सो बहुत ही जल्दी ये वसुदेव की कृपा है, आई मीन हिज सन्स ब्लेसिंग, दैट वेदवती became pregnant and she had son, next son, I mean. So Vasudev now is telling to his father Madhvacharya Bhatta that, Papa, now let me go now, because now you have got your son, so now you have someone to protect you, okay, so now I'm going. So now he left. He leaves and goes to straight to Kabur, and he accepts sannyas there. So, these are the great pastimes of Madhvacharya. We cannot imitate them, but at least we should hear it for getting more and more uh, fondness toward Madhvacharya. He's a great acharya. So there he got sannyas. And he didn't take sannyas for like people, they usually they do out of frustration, or you don't have any other option. बोला जाता है कि वेस्ट में लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन एक प्रोवर्ब है, अभी ऐसा इंडिया में भी नहीं रहा, और इंडिया में लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो संन्यास ले लेते हैं. तो आजकल इंडिया में भी ये ट्रेंड नहीं चल रहा है, इंडिया में भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं. बट बिफोर इट वाज सो, बट नो, Madhvacharya, I mean, Vasudev didn't take sannyas out of frustration. He didn't take sannyas because he don't have any other option. He didn't take sannyas because he was weak or he was less education. He didn't take sannyas for any other reason other than mission. For what mission he has been sent by Supreme Personality Goddess Sri Krishna. So just to propagate the pure devotional culture, pure devotional philosophy, in the theory of pure devotion service to Supreme Lord Hari. And he takes sannyas. He just, he just 11-year-old, 11 saal. And then again, his spiritual master Achyut Preksha renames him, and he becomes Purna Pragya. So you can keep counting the names. What are the different names of Vasudev or Madhvacharya and different stages? And Purna Pragya and now Purna Pragya and his spiritual master Achyut Preksha now together, and both of them have gone to Ananteshwar temple after having this ceremony sannyas. And there again, another the same, same person who had been like many times being possessed by Ananteshwar, he holds the hand of Madhvacharya, पूर्ण प्रज्ञा, उनका हाथ पकड़ के ले जाते हैं दिखाने के लिए उनके गुरु को. किनको? अच्युत प्रेक्ष को, कि सी दिस इज द पर्सन पूर्ण प्रज्ञा, आई गिव हिम टू यू एज डिसाइपल बिकॉज अंडरस्टैंडिंग योर प्योर डिवोशनल सर्विस टुवर्ड मी, सो प्लीज टेक केयर ऑफ हिम. एंड इन दिस वे he just simply vanishes. So now both of them start staying together, and then one day, and this 11-year-old Vasudev tells his spiritual master Achyut Preksha that Gurudev, I want to go to Ganga to take bath. मैं गंगा जाना चाहता हूँ. गंगा मतलब साउथ इंडिया में गंगा जाना एक बहुत बड़ा तीर्थ है. नॉर्थ इंडिया में गंगा में स्नान करना लाइक just go here, just some few kilometers and you take bath. Ganga is so very much accessible to all of us. So because we are in North India. लेकिन साउथ इंडिया के लोगों के लिए गंगा में स्नान करना इट्स लाइक ए ग्रेट, लाइक बहुत बड़ा तीर्थ है, बहुत बड़ा तीर्थ हो गया. गंगा स्नान कर लिए मतलब सबसे बड़ा तीर्थ कर लिए, है ना. तो साउथ इंडिया में वहाँ से गंगा आना मतलब इट्स लाइक, एंड पूर्ण प्रज्ञा इज टेलिंग दैट आई विल गो टू टेक बाथ इन गंगा. एंड अच्युत Preksha, I cannot tell anything, is because he is so very darling disciple of Achyut Preksha. You cannot leave him, but he gives him, okay, you can go, but inside he is feeling like how can I bear the separation of Purna Pragya, my dear disciple. So again, this Achyut Preksha goes to Ananteshwar temple and he starts praying that, oh Lord, please don't let him go to Ganga. Why small little boy, he'll go to Ganga alone? No, I don't think he should go. Please do some arrangement.
Please do some arrangement. So Ananteshwar, Lord Ananteshwar, he hears the prayers, and what happens? Another miracle takes place. Another miracle takes place. One person, the same another, the same person again comes back. The possessed person by Ananteshwar. He tells that, don't worry, Purna Pragya, you don't need to go to Ganga. आपको गंगा जाने की जरूरत नहीं है, हजारों किलोमीटर पैदल चल के. आफ्टर 3 days, 3 दिन के बाद मदर गंगा यहीं पे आने वाली है. बगल में जो लेक है ना, बगल में जो कुंड है, उसमें गंगा माता प्रकट होने वाली है. इट्स माय ऑर्डर टू मदर गंगा टू कम हियर. सो एग्जैक्टली 3 दिन के बाद वहां पे काफी बड़ा एक फव्वारा, लाइक क्या बोलते हैं उसको, लाइक स्प्रिंग स्टार्ट्स ओजिंग आउट फ्रॉम द अर्थ करके. मदर गंगा, जैसे भीष्मदेव को पानी पिलाने के लिए अर्जुन ने क्या किया था, मदर गंगा को पाताल लोक से निकाला था अपनी तीर से. सिंपली मदर गंगा स्टार्ट्स कमिंग आउट फ्रॉम देयर, एंड दैट प्लेस इज स्टिल देयर. एवरी 12 years, प्रत्येक 12 साल में एक बार मदर गंगा वहां पे वैसे ही आती है. अभी भी आती है. So these all great miracles are happening there, and Achyut Preksha was pretty sure now that same person who has come here, who has been actually forecasted by great souls, and that fellow who had jumped over that Lord Shiva's temple and exclaimed everyone that great personality is going to appear, the incarnation of Vayu. So he is that Vasudeva, and he is that Purna Pragya. So they both of them are staying together, learning. He was trying to teach. Achyut Preksha was trying to teach. So once what happened? There's another very big Pandit, and his name was also Vasudev Pandit, who came to Achyut Preksha to defeat him in Shastrarth, or specifically Advaita philosophy. All of them, practically all of the Pandits of India, they are fully into Advaita philosophy. तो वसुदेव पंडित वो अच्युत प्रेक्ष को चैलेंज करने के लिए आए भंडारकारे में. तो वहां पे अच्युत प्रेक्ष के सामने 3 दिन तक लगातार बड़े संस्कृत के शास्त्र, पता नहीं कहाँ से बहुत सारे न्याय वाय सब दे दिया. एंड एवरीबडी लाइक स्टॉप बाउंड, लाइक नॉट एबल टू स्पीक एनीथिंग. एवरीबडी इज क्लैपिंग, and Achyut Preksha is so humble, he couldn't speak much. But now Purna Pragya, 12 साल का लड़का, now he starts speaking, and he smashes like anything. वासुदेव पंडित का हालत खराब, हुलिया टाइट वहाँ पे. And Vasudev Pandit, some followers started defending him, but he smashes them all out there, everyone. So nobody could speak in front of 12 years Purna Pragya. Nobody had dare to do that. By seeing this, Achyut Preksha was like, my God, whom I have accepted as my disciple, किसको मैं अपने शिष्य ग्रुप में स्वीकार किया हूँ. I am his spiritual master, or he is my spiritual master, I don't know. So he practically, Achyut Preksha practically goes and tells to Vasudev, Purna Pragya, that Purna Pragya, I am not your spiritual master, you are my spiritual master. Now I would like to hear from you. So this is not usually it happens. These things cannot be imitated. So make sure that you are taking everything into right notion, in a right mood. So in this way, a small little boy, this 12-13 years old boy, Purna Pragya, was becoming very, very famous everywhere, like such a powerful scholar, powerful great devotee of the Lord. And whenever he was getting time, he was not wasting time. Of course he will not waste time. And every time, whenever he used to get little time, he used to read Srimad Bhagavatam. Whenever he used to get time, he used to simply take up Srimad Bhagavatam and read. एक बार की बात है, अच्युत प्रेक्ष और पूर्ण प्रज्ञा दोनों एक बार भागवतम सुनने गए कुछ ब्राह्मणों के सामने. और अच्युत प्रेक्ष बैठे हुए थे, बगल में बैठे हुए हैं पूर्ण प्रज्ञा, वासुदेव, Madhvacharya, same, Purna Pragya. And Purna Pragya starts objecting the Pandits. You are telling this is not correct. आप यहाँ पे गलती कर रहे हो. This is not the way Sukdev Goswami wanted to tell. This is not the way Vyasadeva
have the indication वासुदेव का ऐसा यहाँ तात्पर्य नहीं है। तो अच्युत प्रेक्षक बोलते हैं यार मेरा डिसाइपल इतना एटिकेट का उल्लंघन कर रहे हैं यहाँ पे। तो अच्युत प्रेक्षक बोलते हैं पूर्ण प्रज्ञा, डू यू नो बेटर देन हिम? ओके, इट्स टू मच फॉर यू, कैन यू प्लीज रिसाइट फिफ्थ कैंटो इफ यू नो बेटर देन हिम? Then immediately, part, all the slokas are coming out from the mouth of Purna Pragya. Everything, patapat, full fifth canto is like in his neck, like we wear Kanthimala, is like whole Bhagavatam is into his Kanthimala in his neck. And then this time another shock to Achyut Preksha. Then Achyut Preksha asking, how do you remember everything? I never taught you, I don't know when you read them all. So very humbly, very sweetly, बहुत ही मीठे स्वर से ये बोल रहे हैं हमारे डियर क्या नाम इनका, पूर्ण प्रज्ञा, that just last life I read this all, so it's not so difficult for me. From last life it's everything coming. So now Purna Pragya started, he was a teenager, he started preaching so boldly. Everywhere he used to go, people used to immediately come around him, because छोटा सा लड़का है, मीठी मीठी बोलता है और बहुत मधुर बोलता है. Because somebody glorify the Supreme Personality of Godhead, then it becomes quite very much sweet, because there is devotion into that, right? So it's like spontaneously coming out from the heart. Just like in Bhagavatam it is told now, Gange Ogam Udanvati. That's like devotional service which starts from Gomukh and stops in or merges in Bay of Bengal, and nothing can stop in between. Similarly, the devotional service as such. So Purna Pragya was like glorifying the Supreme. It was so very much charming and sweet to hear, and everybody was just surround him, and there he used to preach like this. Whoever used to hear, all that different bogus conception used to just get vast, and the full conviction for the Supreme Personality of Godhead, that Supreme Personality of Godhead is Krishna, and he is servable, he is worshipable, used to get reinstated into their hearts. So Srila Prabhupada writes that there are two types of Bhagavatas, no? There is Vyakti Bhagavata, there is Book Bhagavata, and there is Vyakti Bhagavat. Vyakti Bhagavat मतलब क्या? जो बुक भागवत के अनुसार चलते हैं. So serving either of them or both of them gets one closer to the Supreme Personality God and gets to the love of Godhead. And of course, Srila Prabhupada tells so many places that we can read and understand Bhagavatam only with the association of or through Vyakti Bhagavat. Not like reading Bhagavatam from someone who has not even practicing a single sloka of Bhagavatam. Not like that. So Bhagavat Podogiya Bhagavate Risthane. So Madhvacharya, Purna Pragya was perfect walkie-talkie Bhagavatam, roaming around everywhere, spreading the waves of Srimad Bhagavatam. So he was spreading Bhagavat Dharma in such a way that another name was given to Purna Pragya, and his name has become Bhagavat Pad. Usually we have one great Maharaj in our International Society of Krishna Consciousness, Bhagavat Pad, His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, right? So Maharaj is also named as Bhagavat Pad. So everywhere he was just glorifying the Supreme Personality of Godhead. Everywhere. Achyut Preksha thought that now it's okay. I should not take retirement, because this, my dear disciple, is capable of doing much more than what I would have done. Like I am now as a Acharya. Now I think he should become Acharya. So Achyut Preksha installs Madhvacharya, Purna Pragya in the Peeth, that place, and now he thinks, now I should now take retirement. So then again the name changes, and then Purna Pragya becomes Ananda Tirtha.
तो तीर्थ मतलब क्या? तीर्थ मतलब वहां पे जाके लोग प्यूरिफाई हो सकते हैं, शुद्ध हो सकते हैं, राइट? तीर्थ मीन्स दैट तीर्थ लाइक देयर आर डिफरेंट प्लेसेस वेयर रिवर्स लाइक यमुना गंगा फ्लोज, दे आर कॉल्ड तीर्थ. सो ही आनंद तीर्थ, मतलब कि उनके पास जाने से आपको आनंद मिलेगा, सिर्फ आनंद मिलेगा, आनंद ऑफ डिवोशनल सर्विस टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, आनंद तीर्थ. सो फिर से जब आनंद तीर्थ के रूप में इस्टेब्लिश हो जाते हैं वहाँ पे आचार्य के रूप में, पूर्ण प्रज्ञा मीन्स हैज बिकम आनंद तीर्थ. देन अगेन अनदर वेरी बिग stalwart preacher of impersonalist school comes and Advait idea, and he started, I mean, fighting with him practically. They came with such a very big क्या बोलते हैं उसको, फाइटिंग स्पिरिट, है ना, कि इस बार जाएंगे तो आनंद तीर्थ को, और अच्युत प्रेक्ष तो अब रिटायर हो गया है, तो दोनों को उड़ा के आएंगे. And they have come with some of their friends also, some Buddhist friends and Jain friends. Jain and Buddhist are the two darshans, atheistic darshan in Hindu philosophy. Hindu philosophy telling is not good, but there are some few darshans, I will tell you later. तो अच्युत प्रेक्ष को बोले कि देखो भैया मैं तो रिटायर हो गया हूँ, आपको कुछ बोलना है किसको, जाके आनंद तीर्थ को बोलो. You know he is capable of talking with you. I'm not going to talk with you. So they went and started talking. So very few hours, like 1-2 hours only, they were smashed, fully smashed. The Advaitavadi was fully smashed. They don't had any word to speak. Practically, so many people had gathered. As we discussed, Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj also had the similar type of thing. So many people had gathered. There were judges who also there to decide that who is going to win or who is going to lose. और वहाँ पे सबके सामने आनंद तीर्था खरी खोटी कर देते हैं अद्वैत फिलोसफी की. उसके बाद आता है दिस जैन फिलोसफर, हिज नेम इज वाद सिम्हा, मीन्स हीज नाम है उसका वाद सिंह. वाद सिंह मतलब ही इज बिग ओरेटर and he is like lion also. So lion like orator, and he comes and he started speaking. Then Madhva takes up at one point and he is like सारे एक एक वर्ड का, जैसे भीमसेन क्या करते थे, एक एक तीर का वो छलनी कर देते थे. I mean he used to the tear, all the different arrows, whatever used to come, used to just give them such a blow that used to go back again and hit the same person from where it has come. So everything is started like सब सारे जितने भी न्याय, जितने भी तर्क, सबको डाइजेक्ट करके सबको काट काट के फेंक दिया. Now like nobody is in front of him. Now at last comes this Buddhist philosopher, his name is Buddhi Sagar. So his name is Buddhi Sagar. His name is Buddhi Sagar मतलब कि बुद्धि का सागर है, बहुत बुद्धि है उसके पास. लेकिन आनंद तीर्थ इज लाइक जस्ट लाइक ए चाइल्ड. उसके सामने बुद्धि सागर की सारी बुद्धि खत्म हो जाती है. He becomes dry buddhi. So now he becomes so very famous. Now he started thinking that now I will smash this Mayavad, smash this Advaita philosophy. Now he takes up to preaching everywhere practically. So he started preaching so vehemently everywhere. Advaita philosophy was being smashed wherever he was going. I mean nearby, because he was just somewhere around 17-18 years old boy. So he started smashing this Sarirak Bhashya of Shankaracharya. So Vedanta Sutra is the sutras which is actually written by Ved Vyas himself. After whole Vedas has been written, Vedanta Sutra were wrote by this Ved Vyas, and its natural commentary is Srimad Bhagavatam. But later on, to establish Veda, Shankaracharya comes and writes his own Bhashya upon Vedanta Sutra, and he names it to be Sarirak Bhashya. तो शारीरक भाष्य की छलनी करने लगते हैं हमारे आनंद तीर्थ, या फिर बोला जाए तो पूर्ण प्रज्ञा. And his explanation of Vedanta Sutras and explanation so sweet, very sweet, and he has become like Acharya. So his name turns to
sweet Acharya, Madhvacharya, Madhu. So Madhu means very sweet, and in one sense, now Madhvacharya has come. So so many names of Madhvacharya. I mean Madhvacharya. क्या क्या नेम है? याद है किसी को? पहले था वासुदेव, उसके बाद हनुमान तीर्थ के बाद क्या आया? पूर्ण प्रज्ञा, उसके बाद आनंद तीर्थ के बाद क्या आया? कोई बोल सकते हैं? पहले भगवतपाद है। भगवतपाद, आनंद तीर्थ, then Madhvacharya, right? So now Madhvacharya has now aroused into the horizon, and now he is going to go throughout the whole India to smash the whole this Advaitavad and establish pure devotional service to the Supreme Personality of Godhead. And in fact, in one of the assembly, when he was giving his speech, his father has become old. His father name Madhvacharya Bhatta, and Madhvacharya Bhatta has come to hear his own son, and he simply is so happily crying amongst our audience, and he's thinking that my dear son, he is remembering his childhood pastimes as Vasudev, how he to do different pastimes. He's simply crying. So by such a great preaching, being pleased by such preaching, so many pandits started telling to Madhvacharya that kindly write something upon Vedanta. It's okay, they have written some, but you also write. Specifically, his spiritual master Achyut Preksa tells that अरे इधर उधर जाके सबको आप चपकाते रहते हो, सबको गरमाते रहते हो, सबको बर्स्ट करते रहते हो, पटाखे मार लगाते रहते हो, उसको छोड़ो, वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखो आप, ठीक है? If sutra, the bhashya has been written, then automatically people will understand, and they will go and just connect it there. That's so very important. So acharyas means they give very much, emphasis upon books. Srila Prabhupada also given such a great emphasis upon books, because unless somebody reads book, he is not able to understand the real philosophy. He is not able to understand what is the tattva. He is not able to understand who is he. It's not so easy. So writing books had been systematically, this culture of acharyas. So books are the basis. इसलिए Srila Prabhupada जी ने बोला है, books are the basis. So reading books are so very important, and that's why Srila Prabhupada has given emphasis in society, distribute books as much as possible, because Srila Prabhupada books are like condensed essence of whole theistic Vedanta conclusions. It's like summum bonum. So there are atheistic Vedanta conclusions and theistic Vedanta conclusions. There are 6 types of darshans. 6 types of darshans in Sanatan culture. They're called Mimamsa, Nyaya, Vaiseshika, then Yoga, then comes what? Jaiminis Nyaya, yeah. And there comes at last, there is one more, I'm just forgetting that. There are 6 types of darshans, which is actually discussed. So then our Madhvacharya, he tells that now we are going to move to different places to preach, and how he is going to preach, the powerful preaching moving around all over India. So that we'll be going to see in the next class. Yeah, for today, this much only. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Okay, so 100% data has been exhausted, so don't worry, Prabhus, you will get 200% data tomorrow. Okay, so maybe Ishtadev Prabhu will send the quiz link to all of you. Kindly go to the quiz link and get some data in loan from some devotees. You can fill that quiz. It will be easier. Yeah. So tomorrow is Srila Madhvacharya's disappearance day.
and hopefully tomorrow morning, I don't know, but tomorrow evening we will sit again. What do you say, all of you? Tomorrow evening can we sit for again? Tomorrow evening can we sit at the same time? We'll complete the whole session. Okay. So how many of you are feeling to sit tomorrow? Please raise your hands. If we go for majority, then we shall go. So I see we are in minority so still now. Only 5, 6. Okay, 3, 3. 6. Okay, I think now we are in majority. Okay. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Okay. So we can go tomorrow. Tomorrow again once again 8 o'clock. Yeah. So at 8 o'clock we'll continue on with this. Legends of Madhvacharya. Shripad Madhvacharya ki jai. Any devotee have any other any comment, any question as such? Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Prabhuji, Hare Krishna. Yes. morning, Anay Prabhu got highest marks in quiz. Haribol. Jai. Congratulations. But many, very less devotees filled actually. Only Anay Prabhu, Rishabh Prabhu, Nitish Okay, Prabhu. devotees are requested, kindly fill it. Kindly fill it. You know, this will also be a service. One servant is making Google form, and another servant will fill the form. Okay, so this will be great service. Hearing is good, but somehow to make this culture of hearing and getting assessed, unless we get assessed, the learning process doesn't complete. Learning process anywhere, school learning anywhere, unless there is assessment, actually learning is not complete. So please, take to this process. Maybe I don't think he is giving such very tough questions. It's easier. So okay, thank you so much. Please chant the holy name of Lord Hari, and please the heart of Acharyas. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande. Hare Bol. Hare Krishna.